Proper fractions are the fractions which the numerator is smaller than the Numerator denominator. is less than the denominator. Very good. And what about the improper fraction? What are improper fractions? The fraction which the numerator is larger than the denominator. The fractions in which the numerator is greater than the denominator, those fractions are known as improper fractions. I told you about like and unlike fractions also, Riyansh. Do you remember what are like and unlike? No, ma'am. I I forgot. haven't. I forgot. You forgot. Okay, I will tell you again. Chalo. Like fractions and unlike fractions. Like fractions means the fractions in which the denominator is same. When the denominators are of some, like two fractions are there, 2 by 3 and 4 by 3. In both these fractions, is the denominator same? Yes, ma'am. So they are known as like fractions. Fractions whose denominators are same, those fractions are known as like fractions. Like और unlike fractions pairs या groups में होते हैं. You cannot say that 2 by 3 is a like fraction. आपको like fraction बताने के लिए आपको एक दूसरा fraction भी पता होना चाहिए. जैसे if I write 2 by 8, will this be like fractions now? No, Is ma'am. 2 by 3 and 2 by 8 like fractions? No, ma'am. No, because the denominator is different. 3 and 8 are different numbers. They are not equal. Therefore, they are not like fractions. They are unlike fractions. So now have you understood the fractions in which the denominator is same is known as like fraction, whereas the denominators whereas the fractions in which the denominators are different are known as unlike fractions. Clear? Yes, ma'am. Clear, Riyansh? Yes, ma'am. ओके अब देखो फ्रैक्शंस में जैसे हम लोग नंबर्स में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन नंबर्स सेम वेज वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन द फ्रैक्शंस आल्सो हम फ्रैक्शंस का भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं जैसे हम नंबर्स का करते हैं देयर आर सम रूल्स एंड देयर दैट शुड बी केप्ट इन माइंड देखो लाइक फ्रैक्शंस होंगे तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होगा सी सबसे पहले मैं आपको एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस बताती हूँ टेल मी व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस The fractions in which the denominator is same. yes are known as like fractions okay so I have two fractions 2 by 8 and plus 3 by 8 they are like fractions or are they not They are like fractions. they are like fractions so see how we will add this the denominator will be the same we will have 8 as the denominator and the numerator will get added up add the numerator add 2 plus 3 do 2 plus 3 Five. 5 so 5 by 8 is the answer we do not add the denominators हम denominators को 8 plus 8 16 नहीं लिखेंगे we will only write 8 as the denominator clear Yes. मैम अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए आंसर बेटा डोंट वरी अबाउट द इम्प्रॉपर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन ओवर हियर यहाँ पर आपको प्रॉपर ही दिया जाएगा ज्यादातर ठीक है you just worry about the like and unlike fractions clear okay you will be provided with proper fractions only chalo now tell me the answer Riyansh चलो
Reyansh, tell me the answer quickly. Yes, ma'am. 24. 24 by 13. 24 by 13 is our final answer. This is the answer. Now, have you understood how to add two like fractions? Yes, ma'am. Okay. Now talking about subtraction of like fractions. अभी हम लोग like fractions ही पढ़ते हैं. उसके बाद I will tell you how do we operate on the unlike fractions. Subtract like fractions. The question is, we will write the denominator as same. 12 जो denominator है वो same आ जाएगा, and we will do the subtraction on the numerator. 8 minus 2 is 6. 6. So 6 by 12 will be our answer. Reyansh, have you understood? Same addition की जगह subtraction करना है, इसमें add नहीं करना, minus करना है, बाकी सारे steps same होंगे. Have you understood? Yes, ma'am. Okay, now let's talk about addition of unlike fractions and addition and subtraction of unlike fractions. मैम एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का नहीं होता. हाँ बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का नहीं होता. अभी तो हम लोगों ने बताया, मैंने बताया आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. और सब्ट्रैक्शन ये क्वेश्चन जो लिखे. हाँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस नहीं होता है क्या? होता है बेटा. मैंने बस आपको ये जो हेडिंग लिखी है मैंने उसमें अलग अलग लिखकर समझा दी थी, बाकी वो सेम होता है. ओके. सी नाउ अब हम लोग ऐड पढ़ेंगे. एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस आई विल टीच यू. देयर आर 3 स्टेप्स. उस 3 स्टेप्स को बहुत केयरफुली समझना. एलसीएम निकालना आता है? हाउ टू फाइंड एलसीएम? यस मैम. आई हैव ओनली टॉट यू ना लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. यस. ओके. सबसे पहले देयर इज अ क्वेश्चन 2 by 5 प्लस 3 by 8. सॉरी 5 by 10. ठीक है. 2 by 5 and 3 by 10 है. Is the numerator, is the denominator, are the denominators same? Tell me, are the No, denominators same? No, denominators are not same, so they are unlike fractions. अब इसमें क्या करना है? You first step is to take the LCM. You have to take out the LCM. What are you getting as the LCM, Reyansh? Tell me. Of what number? Beta, of 5 and 10. अच्छा हाँ, take LCM of the denominators. You have to take the LCM of the denominators. 5 and 10. Lowest common multiple of 5 and 10. Ma'am, 10. 10. Very good, Reyansh. LCM is coming as 10. ठीक है. Now we got the LCM. अब हमें क्या करना है? LCM is the new denominator. Keep this in your mind. This is the new denominator. इसको हम लोग न्यू डिनोमिनेटर कंसिडर कर लेंगे. सेकेंड स्टेप, टेक फर्स्ट फ्रैक्शन. फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सा है? 2 by
What is the first fraction over 5. here? 2 by 5. Take the first 2 fraction. by 5. हाँ, अब इस 5 को we have to make 10 because 10 is our new denominator, right? 10 is our new denominator. Multiply any number by 5 so that we get 10 over here. On multiplying 5. On multiplying 5 by which number do we get 10? 2. 2. On multiplying 5 by 2 we get 10. हमें 10 लाना है डिनोमिनेटर में बिकॉज हमें पता है कि वो हमारा न्यू डिनोमिनेटर है. हमें 10 लाना था तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. वी गॉट 10 एज द डिनोमिनेटर. नाउ द नंबर which is multiplied over here will be same here. यहाँ पर भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा. जो डिनोमिनेटर में आप कर रहे हो वो सेम चीज आपको न्यूमरेटर में करनी है. ठीक है? Yes. Now what is 2 into 2? 4. 4. We got the first fraction as 4 by 10. Now moving on to the second fraction, we have 3 by 10. Here our fraction is our denominator is already 10, but we will still do that. Multiplying 10 by what gives us 10? 100. Hanji, tell me. By multiplying 10, by what do we get 10? 1. 1. So what will we multiply over here? बेटा यहाँ पर भी हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में? 1. 1. जो डिनोमिनेटर में कर रहे हो सेम चीज न्यूमरेटर में भी करनी है. So we will get 3 by 10 as our fraction. We got 4 by 10 and 3 by 10. Now check, are the denominators same? Yes, ma'am. Are the denominators same? Now we have a like fraction. We have a like fraction 4 by 10 plus 3 by 10. Now can you do now can you add? Add and tell me the answer. Okay. Tell me. मैम ये तो लाइक फ्रैक्शन हो गया. ये तो लाइक फ्रैक्शन हो गया ना. तो अब लाइक फ्रैक्शन वाला एडिशन मैंने आपको बताया हुआ है कि बस आपको बस वो करना है. हम लोगों ने इसको इसमें चेंज कर दिया है. नाउ यू जस्ट हैव टू ऐड इट लाइक वी ऐड द लाइक फ्रैक्शंस. कीप द डिनोमिनेटर सेम, द डिनोमिनेटर विल बी द सेम and add the numerators. Done, ma'am. What is the answer? 7 by 10. 7 by 10 is the answer. So हमको unlike को like में change करना है and then add करना है. Change करने के लिए हमने LCM लिया, हमारा new denominator बनाया, दोनों में 10 आया और फिर हमने उसको add कर दिया like बना के. Have you understood, Reyansh? No, ma'am. See, we will do one more question and you will get it. It's okay. We don't get, this is a little tricky portion and I know that children often don't get it in one go. We will do 2-3 more questions and then you will understand. See. Two by 3 plus 8 by 4. Denominators are not the same. They are different, means unlike fraction. और जब unlike fraction का addition करते हैं, first step हम क्या करेंगे? We will take the denominators LCM. हाँ, we will take the LCM of the denominators. Take LCM of the denominators. Tell me what is the LCM coming as? Tell me what is the LCM of
3 and 4? 12. 12. Very good. ओके, अब हमारा न्यू डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है? 12. 12 बनाना है। सबसे पहले वी विल टेक दिस वन, ठीक है? लेट्स टेक 2/3। we took 2/3, we have to make this 3 12। हमें इस 3 को 12 बनाना है। tell me by which number should we multiply? मैम 4. 4। ओके, सो अब न्यूमरेटर से में क्या मल्टीप्लाई होगा? न्यूमरेटर में 6. नो बेटा, हमें 12 नहीं बनाना है, हमें न्यूमरेटर में 12 नहीं बनाना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना है। न्यूमरेटर में भी सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, 4 ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? ओके मैम। सी, आपने 12 बना लिया, यू गॉट 3 इंटू 4 12। जो 4 से मल्टीप्लाई 3 को किया है वो सेम नंबर से आप न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज 2 4? 2 इंटू 4? 8. 8। अच्छा, अब इस वाले के साथ क्या करेंगे? टेल मी, क्या करना है हमें? डिनोमिनेटर क्या बनाना है? डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन बनाना है। डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन, विच मीन्स क्या बनाना है? 12 बनाना है। दिस वन हम लोगों को एक फ्रैक्शन मिल गया है, हमें दूसरा फ्रैक्शन चाहिए, सो डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। टेल मी बाय विच नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 4 दैट वी गेट द डिनोमिनेटर एज 12? मैम 3 बाय 3। ओके, हाँ। सो 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? हमें 12 मिल गया। अब न्यूमरेटर क्या होगा? 3. 8 इंटू 3। वेरी गुड। व्हाट इज 8 3 जा? 8 3 are 24. 24। अब हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शंस आ गए, 8/12 एंड 24/12। टेल मी, आर दे लाइक? Yes मैम। नाउ कैन यू add and quickly tell me the answer? Yes Reyansh, tell me the answer quickly. ओके मैम। 32 into 12. 32 into 12? 32/12। ये आंसर आ रहा है रेयांश आपका? यस मैम। अब आपको समझ आया ये कैसे करना है? यस। सबसे पहले एलसीएम लेना है एंड देन फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम एलसीएम बनाना है, सेकेंड फ्रैक्शन का भी एलसीएम सेम करना है, एंड देन यू हैव टू ऐड दोज नंबर्स। अंडरस्टूड? रेयांश, हैव यू अंडरस्टूड और यू वांट? हाँ, एक और बार करवा दो। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ओके, चलो इस बार सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी द सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ वहां पर लास्ट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ आया? तो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला करें। चलो, टेल मी व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? LCM of the denominator. LCM of the denominators. Tell me what is the LCM coming as? 2. हाँ, No मैम 8. हाँ, 2 नहीं आ सकता। लेट मी चेक। क्या होगा बताइए? 8। 8 is the LCM। चलो अब क्या करेंगे? LCM आ गया,
अब मैम उसको न्यू डिनोमिनेटर में करना है। न्यू डिनोमिनेटर में करना है सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट वाला फ्रैक्शन ले हम लोग। चलो हमने ले लिया 1/4। वेरी गुड। ओके, टेल मी अब क्या करेंगे 1/4 के साथ? उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 8। हाँ, तो मैं इसको नंबर जिसमें 8 आ सकता है उसको हाँ, तो टेल मी कौन से नंबर से यहाँ पर 8 आ जाएगा? 2। 2। What will be multiply in the LCM? 2। 2। चलो यहाँ पर क्या आएगा? 2। 2। This is our new fraction. Very good. Okay, now tell me what will we do what will be our next step? मैम we need to do 1/8 and into it. हाँ, चलो टेल मी हमको क्या मल्टीप्लाई, हमें क्या नया फ्रैक्शन मिलेगा, मुझे वो बताओ सीधा। मल्टीप्लाई एंड टेल मी व्हाट विल वी गेट एज आवर न्यू फ्रैक्शन। हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए? व्हाट डू वी वांट एज द डिनोमिनेटर? हमको 8 चाहिए। 8 चाहिए। So to get 8 over here, what do we have to multiply over here? 1। 1, right? So 1 will be multiplied over here also. We will get 1. So 2/8 and 1/8. We got 2/8 and 1/8. Now अब क्या करें? अब तो 2/8 minus. 2/8 1/8. Tell me the answer. Final answer. 1/8. 1/8. Very good. Now have you understood? Yes ma'am. Very clearly. Any doubt? No ma'am. Okay. Now I want you to do some questions and tell me the answer. Will you? Yes. Okay. चलो. Solve this one and tell me the answer. 2/5 plus 3/8. हेड्रॉन 3D को क्या कहेंगे? पॉलीहेड्रॉन. We analyze the relationships between phase F in the bracket, vertex B in the bracket and edges. Quickly solve, Riyansh, and tell me the answer. Okay ma'am. Yes. Yes. Solid shape formula and part. सबसे पहले डिटेल लिखिए. Then shapes pattern. Then shape pattern transition. And shape patterns transition in 3D geometry. LCM नहीं आ रहा है रियांश? एलसीएम हो गया है। एक ये क्या आया सेकंड है? LCM क्या आया है? टेल मी. मैम एलसीएम 40 है। वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, नाउ यू कैन डू दैट. चलो. The LCM is 40 only.
चलो, tell me the answer. Yes, ma'am. फर्स्ट फ्रैक्शन क्या आया है? फर्स्ट न्यू फ्रैक्शन जो है वो कौन सा है? Ma'am, it is 16/40. वेरी गुड. नहीं, अभी ठीक है. Done, ma'am. हाँ, what is the answer? Tell me the final answer. 31/40. Very good, Ryansh. It is 31/40 only. Very good. चलो, do one more question or very easy one. 1/2 plus 1/3. क्या होता है बेटा? A flat surface of a 3D solid. ठीक है? Do you know? Do you know 3D solid? 3D solid एक शेप होता है जो चार एंगल से दिखता है. ठीक है? साइड से, ऊपर से. ठीक है? इसको बोलते हैं 3D. 3D आर्ट देखे आप लोग? ड्राइंग आर्ट देखे आप? What is the LCM coming as? 6. Very good. Solve. This means partner. Okay. Align segment where two faces meet. H क्या होता है? Align segment. Align segment जानते हैं आप लोग क्या होता है? Align segment where two faces meet. यहाँ two faces मिलते हैं आपस में. इसी को क्या बोलते हैं? H. तो a corner forms of four edges. Understand everyone? Formula क्या है इसका? F plus total formula F plus B minus E. Yes. बेटा इसी का फॉर्मूला है जो कि फाइन है. तो फॉर्मूला फाइन पहले एक्सप्लेन करिए उसके. Ma'am, the Yes. answer is 5/6. Very good. The answer is correct. It is 5/6. So, Reyansh, have you clearly understood how to solve this unlike fractions? Yes, ma'am. Chalo, do some questions. I'm giving you 2-3 more questions for your practice. Do that and then we will move on to multiplication. Ma'am, do of subtraction. I'm giving of subtraction only. Solve both these questions and tell me the answer. Okay, ma'am.
मैम ये पहला वाला लाइक फ्रैक्शन है. You can get the answer just like that. You don't have to find the LCM. You can directly subtract and get the answer. Tell me the answer. Okay, ma'am. Wait, ma'am, I'm coming. Reyansh, where are you? Come back and solve the questions. Yes, ma'am. Chalo, solve the first one. 8 by 9 minus 3 by 9. Yes, ma'am. You don't have to find the LCM. Yes, I'm not finding the LCM. I know. It is 9. What is the answer for the first one? Ma'am, I didn't find it yet. Ha, beta? I didn't find it yet. For the first one, you have to just minus 8. You just have to subtract 3 from 8. You don't have to find the LCM for the first one. It is like fraction. It is the same. Are you finding LCM for the first one? No, ma'am. You don't have to. You just directly subtract. Done, ma'am. What is the answer for the first one? 5 by 9. 5 by 9. Very good. 9 will be same and 8 minus 3 is 5. So 5 by 9. Okay, now do the second one quickly. Six, this one 6. 3 by 4 minus 1 by 6. Yes, ma'am. Done, ma'am. Done, Hanji, ma'am. what is the answer? 7 by 12. 7 by 12. Okay, let me solve. Let me also solve. I don't know the answer. Let me solve. Let's check. What is the LCM, Reyansh? 12. The LCM is 12. Okay, I know that LCM is 12. Chalo. 3 by 4. What will we multiply? Ma'am, it will be multiplied by 3. 3. Okay. What we will get? We will get 12 and in the numerator? 9. 9. Okay. Then 1 by 6.
By which number will we multiply to get 12 as the denominator? 2. 2. Good. So 2 by 12. 9 by 12 minus 2 by 12, we get 7 by 12. Very good. Very good. So now have you clearly, and yeah, I know that you have clearly understood. You have done all the questions correctly. Very good. Chalo, let's now learn about the multiplication of fractions. Is multiplication of fractions there in your book? Check and tell me quickly, Ryansh. Yes, ma'am. It is there? It is multiplication and division also there. Okay, okay. ठीक है. Let's study first. Let's study multiplication. Multiplication of fractions is very easy. You just have to multiply the numerator with the numerator and denominator with the denominator. See, if the fractions are 2 by 3 multiplied by 5 by 2, इसमें like और unlike का कोई matter नहीं होता है, ठीक है? Whether it is like or unlike, you just have to multiply, ठीक है? Yes, ma'am. See, you will multiply 2 and 5 and 3 and 2. So numerator 2 into 5 कितना होगा? 10. And 3 into 2 will be? 6. 6. We got our answer as 6. So multiplication is very easy. समझ आ गया ना multiplication? Yes, ma'am. Numerator with the numerator and denominator with the denominator. Okay. See. Chalo, tell me the answer. Tell me the answer. Yes, ma'am. 1 into 1 will be 1. And 3 into 5 will be? 1 by 15. 1 by 15 is our answer. So we will multiply numerator with the numerator and denominator with the denominator. Is multiplication clear, Ryansh? Yes, ma'am. Okay, let's talk about division now. Chalo, first do some questions of multiplication and then we will move on to division. Chalo. Quickly solve all these 3 questions and then we will move on to division. Yes, ma'am. What happened, Ryansh? Ma'am, I'm in the third question. You are not able to multiply 16 into 15. Yes, ma'am. Quickly do that. You know how to multiply 16 and 15, na? Multiply. Yes, I'm doing in the table way.
हाँ, do. You will get proper fractions only, ठीक है? You will get only proper fractions to multiply. Okay, ma'am. Check whether all these are proper fractions or not. Okay, ma'am. Done? Not yet. Do quickly. I have to teach division also. Okay, ma'am. Reyansh, 16 into 15 is 240. Now tell me the answer. Chalo. What will be the answer? For the first one, it is 12 by 40. 12 by 40. Very good. For the second one? 1 by 64. 1 by 16. For the third one? For the ma'am, first the second one it is 1 by 64. 1 by 64. Chalo. Third one is 2 by 240. So now, Reyansh, look here. There is one question. 1 by 7 into 5. How will you solve this? Multiplication of a proper fraction with a whole number. We don't have a fraction now. We have a whole number. We will make this into a fraction. Reyansh, are you listening to me? Yes, ma'am. Real me. Beta, please switch on your camera. What is your name? ये रियल मी हर क्लास में थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करता है. Okay, now see, Reyansh, we have a proper fraction and we have a whole number. We don't have a fraction over here. See, we can make a fraction. हम लोग इसको fraction बना सकते हैं. This is, consider 5 as the numerator and the denominator will be 1. जो होल नंबर वाले होंगे उसमें 5 into 1. कंसिडर द डिनोमिनेटर एज 1 ऑलवेज. ठीक है, जब आपको ऐसा फ्रैक्शन दिया रहे, ऐसा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दिया रहे कि 1 by 9 into 3. So what will you do? Tell me the final answer. The denominator should be 1 and we need to multiply. Then what will be the answer? 3 by 9. 3 by 9. Very good. Have you understood when we have a whole number and a proper fraction, how do we multiply? Yes, ma'am. Okay. So multiplication is very easy. We don't have a lot of time. Reyansh, check and tell me, is equivalent fraction there in your book? Yes, ma'am, it is there in... Okay. So we will study division of fractions and equivalent fractions on Monday. Okay? Okay, ma'am. Okay. Chalo, let me give you some questions. Don't leave the class.
Okay, ma'am. Note down the questions quickly. Okay, ma'am. मैम ये सब जल्दी हो पाएगा? हाँ बेटा, मैम ये सब जल्दी हो पाएगा? beta, these are your homework. You don't have to solve it right now. You just have to write down the questions. Just write the questions, Riyansh. Riyansh, am I audible to you? Riyansh, am I audible? Yes, ma'am. हाँ, just write the questions quickly. You don't have to solve it over here. This is your homework. Okay, ma'am. Done, ma'am. Okay. Thank you so much, Riyansh. I hope you have understood everything. Yes,